Anymore. Good morning, Dr. Erum Jameel. How are you this Good. morning? Welcome to Dil Diyan Gallan. It's a beautiful song. It's so relaxing or it's a very beautiful song. Thank you, thank you. अच्छा लगा आप देखो जल्दी उठ के आए हो हमारे लिए. I know आप the time difference in Dallas. Dallas yeah, तो यहाँ time difference है. 1 hour Good morning. behind, right? तो Yeah, हम्म, 1 घंटे का फर्क है. The Central Time and Eastern Time. There's a difference. Good morning. Always faithful friends. Asha ji, Kamlesh ji, Rama ji. How are you this morning? And right now we have Dr. Erum Jameel with us. Kamlesh ji, good morning, good morning. Hope you're feeling better, Kamlesh ji. Um, she is a hospitalist in a hospital in Dallas, and she did her medical school from Pakistan, and basically the residency is from New Jersey, and then right now she's in Dallas, Texas. तो इनको मैंने यही कह रही थी 1 घंटा आपको जल्दी उठा दिया on the day off. नहीं लेकिन कोई बात नहीं अभी sometimes you have to do night duties और वो और ये सब चीजें तो I'm of course used to it. अब तो बहुत सारे साल हो गए I know when the day off hota hai, like my day off is like on the weekend. अच्छा I don't want to do anything at 10 or 9 o'clock, 10 o'clock. I want to sleep and read the newspaper, enjoy. But thank you so much you took the time to come to us. Good yes morning, Ji. Good morning, friends. Good morning. Welcome, Yerum Ji. I mean, they're all saying welcome to you. yeah thank you thanks I Yeah. can see the comments but thank you yes Yeah, they are. So, Dr. Yerum is a doctor in Dallas, like I said. She can also, if you have some questions or something, concerns, please put them over here and I will read them to her and then she can tell us. And आपकी फ्रेंड है डॉक्टर सोबिया भी आपकी फ्रेंड है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ना आपको हमारे साथ. I know, and I saw that episode वो जो आपका उस पे था and she introduced. I mean, yes, yeah. So Yeah, she's a good friend. she's very very nice, very nice. I see her videos all the time. Videos Live and like streaming. Yeah. yes, yeah. So आप थोड़ा बताएं like ladies के लिए देखो there's so many things going on that we sometimes are not aware of. Like if you get some kind of a if you're feeling sick or something we don't know कि क्या किस चीज़ की problem है. अभी recently my friend she had a little I think vertigo or something and she felt very dizzy and then she had to go to the hospital. So is there any warning sign for is why does that happen? Like vertigo is another thing that Hmm. it does happen to some people, sometimes. Like Yeah. sometimes if you're sitting down, all of a sudden you get up. Is it that Exactly. mean Right, that right, that's what happens? right. It It happened happens to a me. lot. Or usually, I mean, of course, first, Veena, just wanted to say कि भाई मेरा जो वो है internal medicine पे and internal medicine board certified, plus I'm doing the hospital medicine. So I just work in the hospital, not outpatient. So usually I see patients who are admitted from the ER to the hospital. So all the emergencies and all, or जिस तरह भी आप कह रही हैं vertigo and जैसे जो आते हैं syncope जिसको कहते हैं कि you pass out ये वो, तो it's just a lot. We see a lot. Plus मेरा जैसे obesity medicine and lifestyle medicine में मैंने अभी certification किया है. So I mean, of course, these are the things which we will just say कि whatever your questions are, so we can Right. help with. लेकिन vertigo, I mean, of course, this is one thing. और फिर दूसरा जो syncope यानी ये आप जो भी बता रही हैं ना कि जैसे आप उठते हैं और फिर आपका हो जाता है, तो usually क्या होता है कि of course there are many reasons for it. So usually it depends on the age also. As you age, आपका जो nervous system है, it's not as active. तो क्या होता है कि usually जब आप लेटे हुए हैं or if you're sitting or when you just get up, your body जो है stimulate your feet, nerves, और सारा जो blood flow है, it goes up, back up. So sometimes when you age, your blood vessels, nerves are not as sensitive, especially if you are diabetic. Sometimes just Parkinson's disease and all, your nerves are not very sensitive, right? So the diabetes, damages nerves too. क्या होता है कि आप if you're sitting for a long time, or especially when you are just laying for a few hours and you suddenly get up, all the blood flow from up is just down and it just doesn't go up. तो उसमें ये होता है, उसको usually कहते हैं orthostatic hypotension. तो इसमें usually ये होता है, and again that there are different diseases which can cause it. Sometimes बहुत सारे लोग if they are on multiple blood pressure medicines,
तो मल्टीपल ब्लड प्रेशर मेडिसिन से क्या होता है कि यू जस्ट ड्रॉप ब्लड प्रेशर एंड जैसे आप उठते हैं तो इट जस्ट डजंट गेट बैक अप ऑन योर ब्रेन में तो ब्लड फ्लो तो उससे ये क्या आपका हो जाता है तो उसमें यूजुअली ऑफ कोर्स यू फील डिजी इफ योर ब्लड फ्लो इज नॉट गुड तो यू फील डिजी उसमें यूजुअली आपको रिकमेंडेड कि आप जैसे ही आप if you are sitting or is laying down तो आप जब if you're trying to stand up just tap your feet on the floor Oh, for a second ताकि आपकी nerves जो हैं they are stimulated सही है तो always give yourself some time ताकि आप उस पे stimulation हो and then you get up तो कुछ लोगों को तो ये होता है कि ये इस तरह से plus compression stockings होते हैं then it helps sometimes you have to use medicine to keep the blood pressure high so it just depends what could be the reasons there are several reasons as I said that is a so possibility that means low blood pressure is one of the things that you have to be yeah so usually होता है ये कि आपका blood pressure just goes low और फिर it is not stabilized to just maintain the blood flow of the brain तब आपका डिजीज होता है ये वो होता है और बहुत सारे लोग usually we see a lot on Sundays क्या होता है कि Sundays they most of the patients they go to church they're sitting there for what few hours and जैसे they stand जो भी उनका जो होते हैं virtuals उसके लिए and they just pass we see a lot of patients with syncope जिसको कहते हैं जैसे with hypotension or dizziness और फिर they come to the hospital तो ये चीज होती है इसमें वैसे हम मंदिर गुरुद्वारे में भी जाते हैं आपके मॉस्क में जाते लोग बैठते ही है ना वहां पर बैठते हैं जब हाँ अभी बैठे रहते हैं हाँ बैठते हैं वहां पर बैठते हैं और फिर उसका तो फिर ये भी होता है ना कि जैसे आपको जैसे सजदा देन यू आर ऑन द फ्लोर इस तरह से बहुत ये भी होता है कि आप बहुत देर तक उस पे हैं तो फिर जैसे ही आप उठते हैं तो यू जस्ट फील डिजी या आई नो आई हमारे तो अभी गुरुद्वारे में उन्होंने साइड पे आई मीन फॉर पीपल हु कैन सिट डाउन उन्होंने कुर्सियां रखी हुई है वैसे तो नीचे बैठते हैं सब आई मीन ऑल सिट डाउन but because of some people they guess they have problem sitting down or they have knees operation हाँ तो they sit on the chair हाँ right yeah ये चक्कर तो बस उसमें यही है और फिर of course आप जब बहुत देर तक आप बैठे हुए you always have to make sure कि you just you know just few seconds के लिए आप you tap your feet just to okay good to know that helpful हाँ तो उसमें ये कि आपके nerves blood vessels stimulated और फिर then yeah it's just to prevent of course it's not like just tap it on the floor like tap the feet हाँ जैसे आपकी ये feet है ना then just tap in the floor like it stimulates then okay good that's a good very good thing to know you know because normally we don't know हम नहीं पता चलता हमको so we don't want to land up in the ER right we know that prevention is better cure exactly prevention is always better than cure always better but in the end of things if they are not you know sometimes you cannot just it's not preventable जो भी depending क्या आपको problem है but then you need medicines or things like that so then there is other things yes तो अभी कोई पूछ रहा है अभी यहाँ पर if a patient is coughing and feeling foggy what should they do foggy means I guess they're coughing and they're feeling ज़्यादा cough किसकी हो गई है and feeling very like I guess disoriented or something so what's the best thing to do then? I don't know. It means like a vertigo, just a dizziness type cheese. That's the same thing. ही हो गया vertigo ही हो गया किस्म का. But usually, I mean, a coughing, of course, coughing can be बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. I mean, of course, if something acute, जैसे आप एक दो दिन से coughing हो रही है, you just have to make sure. Sometimes क्या होता है कि with sinuses, आपके fluid जो है, it's in the inner ear पे हो जाता है. तो inner ear में जो है, it balances equilibrium और वो. So when there is some fluid in the inner ear, you can have vertigo. तो उसको यानी vertigo या dizziness. तो sometimes sinus जैसे problem है उसमें भी हो सकता है, जैसे post nasal drip, sinus और इस तरह उसमें भी inner ear के जो infections हैं उसमें भी ये vertigo होता है. One of the causes of that. लेकिन coughing, of course, coughing, I mean, can be with many things. अब आपका तो उसमें history आपको होगी ना कि if you are a smoker. या फिर आप अभी तो आप जैसे coughing, fever इस तरह की चीजें you have to get yourself tested for COVID, flu भी मैंने कल देखा हाँ flu और इस तरह की चीजें so इसके तो बहुत सारे मतलब coughing के reasons हो सकते हैं. But also sinus जैसे आप बोला अभी कहा आपने sinus के साथ the nose gets blocked and then you have a problem breathing वो बड़ी that's a big problem. A lot of people get the sinus. I know that or migraine headaches and that
हाँ they go through a lot of difficult, they see all हाँ this प्लस different एलर्जीज colors. हमारे जेलस में इट्स मतलब सो मच मतलब एलर्जीज इज बहुत कॉमन एंड सिवियर आजकल और कुछ आजकल मेरा सीजन, आजकल यहाँ पर भी सीजन हो रहा हाँ है, चेंज हो रहा है ना, हाँ the चेंज weather is changing, a lot हम्म of different things are happening. So हम्म उसमें उसमें मेरे को भी होती है sneezing and my nose is एलर्जी itching, का like hay fever तो जैसे kind ये of a होता है thing. इचिंग जैसे ना आपकी आईज इच मेरा ऐसे नॉट नेजल इस तरह Yes, से yes, नहीं इचिंग जैसे आईज वगैरह तो आपको पता चल जाता है कि yeah. इट्स एलर्जी सीजन तो आई मीन यूजुअली आई मीन ऑफ कोर्स मेडिसिन आपकी जरूरत है लेकिन आई नो कि वो जो स्टीम होता है स्टीम इट यूजुअली हेल्प्स यू नो विद जो आपके साइनसेस और इस तरह के हैं लेकिन sometimes sinuses are so bad कि then you need I mean of course you have to see ENT डॉक्टर और फिर उसके अलग ट्रीटमेंट्स वगैरह जैसे जैसे हैं अभी कोई पूछ रहा है, why do they have migraines, why migraines happen, that's the question. I Migraines, guess of course, there are मतलब उसका कोई on the research it's not something कोई pinpoint कोई इसका reason वो है I know we know sometimes because of the blood vessels के spasm से आपका इस तरह से होता है but there is no clear cut उसका कोई etiology या reason इस तरह से है तो उसमें ऑफ कोर्स आपके जो पेशेंट्स विद माइग्रेन उनको खुद आप उनको आइडिया होता है कि व्हाट कैन फ्लेयर योर माइग्रेन्स यू नो समटाइम्स किसी का स्ट्रेस समटाइम्स किसी का कोई इन्फेक्शन कोई भी चीज जो है देन समटाइम्स इट्स रिलेटेड टू फूड तो इस yeah, तरह that's से very जो good. I I heard that people with chocolates or हाँ ये oranges, मतलब oranges. and this is not like पूरा totally researched कि कोई specific food वो but I have heard about this यानी कि chocolate sometimes when they eat chocolate then they have these तो उसमें Yes. usually ये small जो blood vessels आपके हैं in the brain they get spasms उसमें तो उससे आपका वो चीज होती है sometimes genetic भी हो सकता है you know sometimes when you don't know anything it's just your genes तो Yeah, I know. उसमें yeah तो ये भी है तो लेकिन I know I am seeing lot of patients with migraines or I'm not sure if just sometimes it's just of course I mean stress is the major thing with everything so that is related और मेरी जो हमारी नैनी जो है वो she's been with us for probably 10-12 years and she has such a bad case of migraine you know I mean she's such a hard working woman lekin ye is so disabling that you cannot do anything if there is a flare up of Really? so I mean of course there are she has been doing like Botox injections vagara or she goes to Oh, neurologist and there are many other treatments for you know yeah. for migraines so whatever works for someone is of course different Yeah, that's it. But आप कहते हो ना, आप ER में भी देख पेशेंट्स को आपके पास आते हैं, तो what kind of a, like I know it's not a, you can't pinpoint one I mean what kind of problems they come up with, like maybe we can, some of us can learn something from to avoid those things that people are going through. usually I mean of course जो हमारे मैं I mean accident is a different thing altogether. हाँ और accident of course accident is something like trauma और वो सब लेकिन yeah, of course with the internal medicine जो हमारा मेरी specialty है तो most common of course there are heart attacks stroke COPD which is you know chronic lung diseases right. उसके बाद asthma exacerbations so usually जो recent time में of course besides COVID of course we know about everything and now everyone is genius on COVID I तो वो know that is true. तो फिर वो तो वो है लेकिन I'm seeing lot of females with a Oh, see. stroke or of course heart attacks or heart coronary artery disease तो बहुत सारी patients और hemorrhagic stroke भी you know like a Do hemorrhagic you think, Arunji, is it because of, do you think the women are having a lot of stress nowadays? Do you think what is because of that? it's just and again I mean of course stroke high blood pressure Right. diabetes you know this is a lifestyle आपका whatever your lifestyle is तो वही आपका your body just shows up some time or another so that is what so that's why when I learned about the lifestyle medicine और जो मैंने इसकी certification की तो that's when I mean you know I mean आपके parents आपको शुरू से ही बोलते आते हैं
eat vegetables, eat Right, fruits, right. और ये वो सब चीजें तो सब वो ठीक है, लेकिन ये कि how things act in your body and with the research evidence based कि how all this thing is related and can prevent all these things, मतलब it's amazing. So मतलब it really works. ये जो आपके डाइट यानी न्यूट्रिशन आपका है, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जिसे कहते हैं, तो वो फिर एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज you are physically active, it is comparable to the medicine to prevent a stroke. Meaning आपका अगर if a stroke हो गया, then you need to be on some medicines, right? Like aspirin, sometimes Plavix, sometimes cholesterol medicine. So if you are physically active, like you are walking and all, so this is like compared to medicine. So if you don't take Right. medicine, you're physically active, it prevents stroke. It's like a So prevention. I mean, it's like medicine के बदले ये चीजें करो. Yeah. exactly, yeah. So Yes. before you come to of course, जहाँ पे medicine की ज़रूरत है, there is no, like there is nothing comparable to the medicine if you need the medicine. Right. Acute cases में जैसे अब of course sometimes if patients are coming with a heart attack, you cannot just ask them to eat ये वो time already gone. Now they need medicine. So to prevent heart attacks or stroke or उस time तक पहुँचने के लिए मतलब you just have to prevent all these things without the medicine. Right. And of course, I mean, I know some people like medicines, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं vitamins भी I don't want to take vitamins. I'm not just any fan of medicines. Usually जैसे fever होता है बच्चों में और ये वो, तो of course there is a certain limit कि आपका इतना fever है, then you have to treat it. But of course, fever, we know it's a body own protective mechanism, कि ऐसा नहीं है कि आपको fever हुआ, you just have to take Tylenol and suppress Right. your body is That is true. trying to attack this virus or bacteria. तो हर चीज में आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है. So that's why जैसे ये diabetes और stroke वगैरह, this all can be prevented with जैसे डॉक्टर एरम जी, मेरा सन इन लॉ भी डॉक्टर है. तो मेरे ग्रैंड किड्स जब छोटे थे, कभी 2 साल के, कभी 1 साल के, उनको बुखार चढ़ रहा है, फीवर चढ़ रहा है, आई यूज्ड टू गेट पैनिक्ड. बीइंग द ग्रैंडमदर, तो आई एम रनिंग अराउंड, तो मैं कहा कौन सी दवाई लेकर आऊँ, क्यों खांसी हो गई है. ही सेड नो, नथिंग, just yeah, right, yeah. लेट इट गो बाय इटसेल्फ. Right, and certain age तक तो आप बहुत सारी चीजें दे भी नहीं सकते. Just Tylenol is simple. और वो भी कि जब एक लिमिट पे आए, लिमिट में पता नहीं, let them fight it out themselves, because ठीक हो जाएंगे. That's what you और said. फीवर का ये कि बहुत ज्यादा हाई फीवर है, then you kids can get seizures और वो, तो आपको इतना फीवर भी नहीं करना, you just have to. लेकिन just simple इस तरह की चीजें, मतलब medicine is, I know, लेकिन pediatrician they do not recommend, यानी कि जो decongestant और ये सब चीजें, no, you don't need that, all these things for minor things. तो actually मतलब ये जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो अभी आप कह रहे थे, तो these also can be prevented if the weight is weight की भी आपने किया हुआ ना लाइफस्टाइल का. Weight plays a big role. I think weight also plays a very big role in all these things. Big role, yes. तो उसमें तो ये है कि अब तो नंबर 1 जो आपका, और ओबेसिटी जैसे कहते हैं, या जो जैसे सिंपल टर्म्स में क्या है, ये आपका एक्सेस फैट या वो है. So it is one of the biggest, उसमें मोर्टेलिटी का वो है, it's considered a disease. यानी कि कोई ओबीज है, of course it's cosmetic reason और ये सब चीजें तो अपनी है अपनी जगह पर, but it's obesity is a disease. जैसे आप high blood pressure, diabetes कहते हैं, so obesity is a disease, you have to treat it. आप जब high blood pressure के साथ जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, so you don't say कि बस ये कर लेना, you treat that, right? तो इसी तरह obesity, अगर कोई obese person है, I mean, the doctor has the responsibility, patient has the responsibility to start treating that. तो उसका भी तो ट्रीटमेंट, आई मीन ओबेसिटी का तो यही है ना कि भी उसको eat less और exercise more, और लेकिन sometimes it's not obesity hereditary होता है. I mean, of course, this is a simple term. हम कह सकते हैं eat less, work physical activity more, but it's not. It's very complicated disease, obesity. यानी कि बहुत सारे लोग, of course, sometimes they are eating right, doing physical activity, but there are so many, diseases खुद होती हैं which hormonal, or sometimes you are on some medicines, antidepressants, कुछ seizure medicines which increases the weight.
तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इन सिंपल टर्म्स में यू जस्ट फर्स्ट थिंक के आपको अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड यानी कि होल फूड, लेस एंड लेस ऑफ जितने उसमें Processed. प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह के जो है रिफाइंड कम से कम, एंड देन होल फूड इट should be main in your diet, और प्लस फिजिकल एक्टिविटी। यानी ओबेसिटी तो उसमें ये ना कि इट इज many cancers they are caused by obesity। फिर आपको तो ये पता ही है कि obesity मतलब it causes high blood pressure, couple of pounds, if you lose couple of pounds your blood pressure goes some points down। तो if you have a right weight or वो तो you sometimes do not need medicines To bring it down, yes. तो तो ओबेसिटी के साथ थोड़ा बहुत हाई ब्लड प्रेशर तो हो ही जाता है ना? That's exactly, yes, because obesity के साथ then not only high blood pressure, every part of your body is then related। तो obesity के साथ if obese then high blood pressure, diabetes, then आप sleep apnea हो सकता है sometimes, you know, then जो patients होते हैं they snore और फिर sleep apnea हो जाता है, वो yes, वो yes. वाली चीज होती है। फिर many cancers are related with obesity। Really? I didn't know that about cancer. I didn't realize that It's an 60 them. evidence based or research कि if you are eating right, physical activity, उसमें ऐसी research और वो भी है कि prostate cancer, यानी कि क्या होता है कि obesity, if you are treating obesity, so many जो genetics, epigenetics है ना, उसमें वो regulate होते हैं in a good way। तो वो जो अच्छे genes हैं they upregulate, बुरे वाले जो epigenetics हैं they downregulate, and it helps with the cancer। Oh, wow. Then again, there's back to a migraine question here. Is there any kind of exercise which can help migraines? ये जो फिजिकल एक्टिविटी जो एक एवरीथिंग जो जनरल जैसे है ना, जिसमें जो इसमें रिसर्च में है कि हाउ मच यू नीड टू डू फॉर दैट योर बॉडी रिक्वायर्स, इट्स यूजुअली 150 minutes a week। Okay. 150 minutes a week आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं to a point where your heart rate is more than your resting levels, so that's called like a moderate activity। that is required for your basic जो भी आपके हेल्थ के लिए। तो हाँ, तो 150 minutes आप ये कह सकते हैं कि 30 minutes for 5 days या 20 minutes यानी every day। तो और एक्सरसाइज है इस तरह की जिसमें if you are walking in a pace where you cannot sing, you can talk but you cannot sing। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रोल कर रहे हैं, तो that is not the activity you are doing। Yeah. हाँ, तो ऐसे कि आपका heart rate has to be specifically, of course, migraine के लिए I do not know कि there are specific, and sometimes I don't know if there is कोई yoga या वो, I'm not aware of that specific exercises, but I know कि general health के लिए that is 150 minutes a week you need to do for general, or this is the basic and minimal you can do to keep Walking. I think walking is one of the best things you can do. मतलब ये यूजुअली ये होता है ना कि इसके लिए आपको किसी चीज की you don't need anything else to, मतलब of course if you go to gym और ये वो सब चीजें it's good। I'm not very gym person, so what I do is I just do something which I can, like अगर मेरे घर में stairs हैं, I can just go up and down 5-6 times, you know, so you do not have to go to gym to do something। I just park my car बिल्कुल far from in the parking lot, ताकि That's what I do the same thing. I do the same thing. इस तरह की चीजें you can क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज का मतलब ये है कि you are not doing it for 1 day 2 day, you have to just incorporate this your lifetime। जो चीज आप डेली रेगुलर कर सकते हैं, that's what you have to do it। तो कुछ चीजें इस तरह से। अब फिर यही है कि बहुत दफा क्या हुआ कि everything you do, like if you're doing your dish washing, you're doing your laundry, you're losing your calories, so just do whatever you have to do, it doesn't have to be always gym kar rahe hain, I mean of course it's the best thing you can do, like sometimes, you know, not everyone
can do जैसे gym मेरे or मैंने मैंने go. मैंने मैंने जिम की वो ली हुई है, कमिटमेंट करी हुई है। मैंने भी ली हुई है और वो स्टैंड बाय पे वो कल जाएंगे, आई कैन गो राइट नाउ, इट्स रेनिंग, मेरी हेडेक होगी, एंड आई मीन यू कैन ऑल, आई हैव टू कुक समथिंग आज वेदर खराब है, all अच्छा kind of इट्स रेनिंग excuses, साइड, इस तरह से एग्जैक्टली, हाँ, all kind of लेकिन ऑफ excuses are कोर्स there. और की सारी चीजें, तो हाँ, घर में तो तो वो वो नहीं लाइफ होता। स्टाइल, या हाँ, घर में you're there, you लाइफ can स्टाइल walk, मेडिसिन में yes, then in the house you're there, you just walk in your house, you अपने do घर में whatever back you and forth, can, go up the stairs, that's a good exercise, you know. हाँ, हाँ, तो आप कोई 5 times अप एंड डाउन हो जाए, देन आई मीन ऑफ कोर्स इट्स एक्सरसाइज, क्योंकि यही सारी चीजें आप जिम में तो जाके ही कर रहे होते हैं ना, तो कर वहां रहे पे होते हैं, इस तरह का होता है, यू जस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर, दैट्स just व्हाट यू आर that is the डूइंग, name, तो मैं जिम में गई थी, but come on, you can do in the house क्योंकि also. ऑल्सो, हाँ, या अगर आप जिम में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स बेस्ट यू कैन डू, क्योंकि अगेन लाइफस्टाइल No, मेडिसिन में I with सिर्फ me मेडिसिन, joined तो मैंने किया हुआ है gym, but personally I have the trainer. Like before the COVID, I used to have the trainer, and then going I used to go once a week with the trainer. फिर मैंने 2 बार ही कर दिया because this way it made me go, and then then you paid for it, yeah, then you you have to pay go, your then, money, you yeah. gotta go. So then I was after that part, the training with the trainer. Then I used to go for Zumba class. So I thought that was really good. I liked it. I liked the I love dancing. तो Zumba में कभी बॉलीवुड के गाने लगा, like it was fun type of a मतलब thing. it's more refreshing ना, I हाँ, enjoyed. हाँ, उसमें भी हाँ, एक्सरसाइज हो जाती है, एक किस्म की, you're dancing, but they give you like a it's a step, big major exercise, yeah, Zumba और big ये वो तो, exercise. And हम्म। also yoga नहीं, is also अब good. that's what I was saying कि क्योंकि दिस इज जो हम ये बात कर रहे हैं ना, इट्स मोर काइंड ऑफ बिहेवियर, क्योंकि आपको अपने भी तो फील गुड करना होता है ना, यानी कि लाइफस्टाइल मेडिसिन में इट्स नॉट ओनली व्हाट यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज देयर इज अ बिग पार्ट, इट्स योर बिहेवियर, योर जो Yes. आपका थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि व्हेन यू गो टू जिम, व्हेन यू डू समथिंग, यू फील गुड कि भाई यू डिड समथिंग, I used to feel so, come back, I used to feel so refreshed. you have So achieved yeah, something, so that yes. sense is positive, it's a positive thing for your body, or that's the thing which you have to do. So बहुत सारे लोग अगर जिम में जाके, किसी ने यही कहा कि you have to discipline of course yourself and your body, Oh yeah. तो एक बंदा जो है, he's going to gym every day starting 7 a.m. he goes, he doesn't do anything, एक कहीं मैं पढ़ रही थी, he doesn't do anything, he just goes to gym for 1 month, he just goes there 7 a.m. come back, doesn't do anything. तो किसी दूसरे ने पूछा कि बस why you're doing it, you're not even using the gym, उसने कहा कि I'm just preparing myself, disciplining myself कि I have to go this time or वो, तो it's just आपका behavior, आपका mind set, Mind set करना पड़ता है. You're right. आपकी I mean, psychology, हाँ, चीज में now I too want to start going again because थोड़े हालात ठीक हो रहे हैं. And that's another question I want to ask you later. But थोड़े हालात ठीक हो रहे हैं, I want to join because I like this. They have the swimming exercises also. Swimming में भी करते हैं. अच्छा, फिर Zumba class होते हैं. Then they have yoga, Pilates, and all these things. You know, उधर ही जाके अच्छा लगता है. Zumba is another thing which I like. Like I said, तो ये सब चीज़ों के लिए I might. वहां पे जाके आपके you are with other people, और वो ना अपने लाइक वो तो उस वो भी it's a जो social connection is part of the life, Yes, that is हाँ, there. so that's what you need to, तो I think I mean, that's the gym में जाती हूँ, उसमें I meet so many people I know. सारे neighborhood के लोग उधर जा रहे होते हैं. so that is So we see a lot of connection, that is people. one of the pillar of lifestyle medicine. Yeah, that is true. Another thing is अभी आपके what do you think? आजकल तो वैसे तो things are relaxed. People have stopped wearing, you know, a lot of places they stop wearing the mask optional now. optional है, हाँ, So तो अब अभी जो optional है. अभी यहाँ पर न्यूयॉर्क में अब स्कूल में भी उन्होंने बंद कर दिया यहाँ at the पे beginning of डेलिस, March. यहाँ पे तो बहुत महीनों से आई मीन द ऑप्शन था, अच्छा, वो अब वो मेरे, अब वही मैं बता रही हूँ कि अब जैसे मेरा बेटा ही इज 12, तो अब क्या है कि उसको इतनी ज्यादा ही इज यूज्ड टू वेयरिंग मास्क कि ही गेट्स एंजाइटी इफ ही इज नॉट वेयरिंग मास्क, अगर उसको जाके अब कहीं वो क्लास लेने जा रहा है तो उसको वो बोलते हैं ना भाई इट्स ओके यू डोंट हैव टू, तो अगर नहीं मुझे पहनना है और मुझे पहना, मतलब दे हैव द किड्स है ना, यू हैव लास्ट बस कपल तो ऑफ इयर्स yes. गॉट सो मच वो कि अब मुझे उसको जैसे ये बात तो करनी पड़ेगी इन अ वे कि इट्स ओके यू कैन मतलब टेक इट आउट, और ये मतलब आपको एंजाइटी हो गई है उसके उसको लेकर आई थिंक, तो I know, and मेरी जैसे मेरी granddaughter, she's 10 years old. तो अभी before the holiday Christmas holidays, the whole
my daughter has, of course, a husband, उनकी nanny भी है, live in nanny है, and then the three kids in the family. Maya's the oldest, she's 10, then 9-year-old and the 4-year-old boy. 9-year-old, I mean, she's also a girl, and then 10-year-old Maya she's also a girl, and then छोटा 4 साल का है, my daughter and my husband and उनकी nanny, सबको हो गया बारी बारी करके. But the 10-year-old, जैसे आपके बेटा है, वो हर वक्त मास्क पहन रही है, she used to eat by herself. वो सारे उधर बैठे, she used to said no, she separated herself, she went to her room, she used to eat alone in the kitchen. She said no, I don't want to get it, and touch wood, अभी तक उसको, she's the only one in the family who never got it. I mean, if you live in the house, तो हो गया. But she was so this thing कि मैंने नहीं, मुझे नहीं होना, मैंने मास्क पहनी रखती थी. Same Exactly, thing, like हाँ. I'm saying, now they're used to wearing it. The 4-year-old when मेरे घर में आता था, तो मास्क पहना हुआ, मैं कहा, you can take it off, baby, you don't have to wear it. No, Nani, it's better. Nani, I keep it here, then I put it on when I want it. I keep it here. तो क्योंकि ये अब इन सारे months में और ये couple of years we saw कि kids were more compliant with the mask yes, rather than exactly, that's what I'm saying. हाँ कि मतलब they are just ये कि भाई ये मतलब they were more focused कि भाई अब इसमें ये नहीं हो वो मतलब they were more compliant with ये तो I know. So what do you think? There's another wave I'm hearing that's coming around. I don't know. the combination of Delta and उसका yes हाँ. So I think वो China वगैरह में वो है. I don't know कि sometimes ये होता है ना कि usually यहाँ पे कुछ cases होते हैं and you come to know थोड़ा सा later. लेकिन I know कि मैं WHO और इन सब का देख रहे थे तो they have started saying कि भाई just be cautious. हाँ, अभी तक हमारे hospital में I have not seen any new COVID patient. हाँ, तो पर अभी कुछ weeks हो गए हैं where probably कुछ जो थे वो जो long haulers जो they were there for months और वो नहीं जो ventilator और वो भी I think they are all gone. इस वक्त at this point, I mean touch wood कि अभी there is no COVID. So do you think because of लोगों ने vaccination has really helped people a lot? Did, yes. मतलब Right? I have not seen any patient और ये मैं पहले की बात कर रही हूँ अभी not this variant क्योंकि उसके बाद तो फिर vaccination का फिर different हो गया ना जो first वाला जो था तो I have not seen any patient who was vaccinated and came to the hospital severely sick. Oh. So I think this अगर हल्का सा भी जो भी होते हैं तो they were usually जो vaccinated और प्लस दूसरा कि हमने कोविड में देखा कि one of the risk factor was obesity. You know कि जो obese patients, even younger patients, we were getting more sick and in ventilator. So obesity was the independent risk factor for getting severely sick with COVID. That's what we saw. Obviously, हाँ तो तो फिर उनके लिए तो और भी मुश्किल होता है because if they are sick then they can't breathe properly. Then the ventilator तो उनको तो हार्ट में सारा that's why तो हाँ तो it's all everything is connected यानी कि ये ना कि आपका everything is so weak या वो और फिर of course with this thing there are more research कि why exactly was happening कि why they were getting more sick but of course there may be many reasons जैसे आपने कहा कि क्योंकि ये होता है ना कि जब आप more obese हैं your lung का जो capacity is smaller you know क्योंकि आपका अगर fat आपके belly के ऊपर है तो your lung जो है more it's not is in full capacity so your breathing or your सब जो है will be all affected. Wow, that's good to know that. I didn't know that. And then they could have some same time like there are some people जैसे पहले first vaccination लिया, some people got really sick. They got affected. I was thinking कि I mean I don't want to drink myself but I was thinking मैंने 2 दिन अपने रखे थे special कि I'm not doing anything. I'm gonna after the vaccination take it easy for 2 days, not cancel सब जो भी मेरे outside activities होती हैं. But when I took it in the morning, like early morning, I think it was 9 o'clock or something, I came home and I'm thinking अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, अभी मेरे को ये होने वाला है. The only thing was that my arm was very sore. वो तो हुआ. उसके बाद में I relaxed, I lied on in the bed. मैं कहा चलो maybe I might fall asleep or something. But I was trying to देख रही थी कि कुछ touch wood. I was kind of okay. I would say
I was fine except for the arm. I mean, it took about 1 week. तो थोड़ा because दर्द होती थी because that was the हाँ thing. काफी होता है हाँ बाकी I was fine. So लोग मुझे पूछ रहे नहीं हमको legs में हो गया हमको तो ये हो गया हमको मैं कहा thank God I didn't go through all that stuff. So I think everybody's body, if you're, I think if you're in good shape or you're exercising and eating properly, these things also help. You know, हाँ आपका अपनी इम्यूनिटी जो वो है लेकिन आई मीन ऑफ कोर्स आपके वैक्सीनेशन का यही है ना मतलब दैट्स हाउ इट वर्क्स कि इट जस्ट प्रोड्यूसेस ऑल द एंटीबॉडीज या जो भी चीजें अगेंस्ट दैट वायरस ताकि इन केस अगर आपका एक्चुअल डिजीज या वायरस हो तो यू आर प्रिपेयर्ड योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड तो वो थोड़े छोटे मोटे जो भी चीजें आई थिंक फीवर बॉडी एक्स ये वो सब चीजें तो होती हैं दैट्स how your body is working against that वो लेकिन it is to prepare your body for any kind of severe problems यानी कि आपके पास already in your standby में your protective mechanism is there in case something happens so you're because it takes time right to develop all your immunity और ये वो सब चीजें if there is active infection तो वो थोड़े बहुत तो आई थिंक सिम्टम्स और साइंस होते हैं आप फॉर वैक्सीन और किसी भी वैक्सीन के तो इट डजंट वो मीन तो कि है. causing I mean, problem देखो before the COVID, उससे पहले भी तो लोग कहते थे जब फ्लू होगा, keep away from people who are sneezing and wash your hands and all. They were saying that before. हाँ क्योंकि हमने लास्ट 2 years में फ्लू देखा ही नहीं क्योंकि everyone was wearing mask Exactly. Everybody's wearing no, mask. that Yeah, means they it went is down. Yes. yeah और आपकी जो छोटी मोटी जो diseases या small diseases small infections ये this is, I mean, I think it's just good for your body because it's preparing your body's immunity, right? To Right. fight if something big happens. So it's just, like a small flu, ये वो सब चीजें, मतलब something it's, you don't have to worry too much about it unless if you're so sick because of all the issues and problems and you have to treat it. वरना तो flu वगैरह तो I mean, sometimes you do not even know कि भाई आपका Exactly. वही मैं कह रही हूँ. I mean, although I take the every year around September, October, I take the flu shot. वो because every year is why उसका strain different होता है जो भी है लेना पड़ता है. I take it every year. So now, what do you think that के COVID का और flu का they might combine the shot or something once a year or something? What do you think? I don't think कि कोई combine वो होगा क्योंकि it's just different हो Different सकता है thing. future they're just doing it वो लेकिन अभी तो खुद ही in so much in research with all this COVID लेकिन ये कि because healthcare workers को तो they have to have the vaccine right for flu भी और वो भी क्योंकि usually क्या होता है कि flu in case आपको flu हुआ then it's sometimes क्या होता है कि it just you get so sick that you're out of your work and things you cannot do anything for a couple 3 4 5 sometimes 5 days तो हमारे उसमें क्या है कि this sometimes if you take medicine और वो तो वो जो आपकी duration जो है days की it just decreases like जैसे हम Tamiflu लेते हैं ये वो तो severity just decreases the severity of the problem तो उसमें ये है कि instead of missing 5 days of work you are probably missing 2 days और वो इस तरह से तो just वो हो जाता है तो और आपकी severity को भी बहुत बहुत कम कर देता है यानी कि you do not feel because sometimes people are admitted they're so sick because of the flu और फिर again it also depends कि उनके underlying कोई other problems हैं किसी को lung problems ये वो so they get more sick with that That's true. वो पहले भी मतलब ये तो flu का तो पहले भी season used to come and then a lot of people used to get sick. I know that. I was not taking the flu shot before. मैं कहा नहीं मैंने नहीं लेना. Until I was getting sick every year for 10 days. 8 to 10 days. फिर डॉक्टर ने बोला why you take it? right yeah And you उसके can बाद still get flu मतलब ऐसा नहीं yeah, कि you won't get flu because yes, it does. तो but उसमें the उसमें ये हुआ कि I was getting थोड़ा बहुत fever थोड़ा but then 48 hours के बाद I then was you're fine. okay I was fine. right So that was a difference. So do you think that the fourth one is coming up too? The कहते हैं fourth vaccination भी आ रहा है for COVID का? तो अभी तो जो हमने जो वैक्सीन लगाया हुआ है और फिर हमने बूस्टर भी लगा लिया तो जो भी हम हाँ वो सब भी अभी तो I'm not hearing anything के required क्योंकि आपका फिर ये डिपेंड करता है ना क्योंकि वो पूरा आपका वो देखते हैं कि अब कौन सा स्ट्रेन आ रहा है एंड देन हाउ मच इज गोइंग पीक और उससे कितने दिन पहले एंड वीक्स यू हैव टू डू
this kind of thing. So abhi to I'm not hearing anything any more vaccination or wo, because abhi everything is very quiet. I know that some places in the world they started having this combo jo bhi variant hai, but I mean so far, हाँ या इस आई थिंक मोस्टली इन चाइना यूरोप में भी कह रहे हैं फैल गया आई डोंट नो correct, yes, now yeah. सो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज लास्ट टाइम ओमनिकॉन एकदम आई थिंक अफ्रीका में शुरू हुआ था इट वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हाँ अभी जो तो क्योंकि of course traveling तो आप यहाँ पे there is no restriction, right? So कोई भी कहीं से आ रहा है then they are या just and it just spreads like a fire. एग्जैक्टली दैट्स ट्रू दैट इज ट्रू सो ये जो आप थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताओ आप कब यहाँ पर आए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर पाकिस्तान से तो कब आए हाँ तो 99 में तो पाकिस्तान में मैंने मतलब अपना जो मेडिकल स्कूल किया था वहां से कराची डाउ से अच्छा फिर अच्छा यहाँ पे आके माय ब्रदर ही वाज स्टडीइंग हियर इन ओक्लाहोमा तो उसके साथ वहां पे मैं थी देन आई हैड टू प्रिपेयर फॉर ऑल द यूएसएमएलई और वो सारी चीजें आपने क्लियर उसका भी एक प्रोसेस होता है 3-4 एग्जाम्स फॉर दैट उसके बाद आई गॉट रेसिडेंसी हाँ न्यू जर्सी में वहां पे 3-4 इयर्स न्यू जर्सी में हम किस तरह मूव हुए मैं ये बात बता रही हूँ कि ऑन माय थर्ड ईयर मैंने अपनी रेसिडेंसी कंप्लीट कर ली थी एंड देन आई वाज डूइंग द हॉस्पिटलिस्ट वहां पे फर्स्ट ईयर ऑफ माय जॉब तो all the ice storm or जो weather का वो तो I had to stay in the hospital because there was such a ice storm back to back. हाँ इतना weather ज़्यादा वो था कि I had to just stay in the hospital क्योंकि we could not discharge any patients. The patients were staying there. उसके बाद आप खुद नहीं घर जा सकते. Then हमने उस वक्त decide किया कि we have to move to a state जहाँ पे weather का थोड़ा सा वो हो. तो मेरे हस्बैंड है उनके फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे होते थे they told us about Dallas और वो up to Dallas का last 3-4 years में जो वो चीज है it was not like this 10 years ago मतलब अब तो लगता है कि all over the world everyone is coming in Dallas or Texas so sometimes the weather और वो तो फिर हम यहाँ पे move हुए in 2010 फिर उसके बाद से बस then यहाँ पर ही है आप Dallas आई कभी नहीं मैंने अभी मैं गई हूँ मैंने मेरी मेरी एक फ्रेंड थी आई डोंट नो शी मूव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क आई थिंक मरियम डॉक्टर वो भी उसका हस्बैंड डॉक्टर आई थिंक ऑन्कोलॉजिस्ट है तो एंड हर मदर दे बोथ मूव टू डैलस अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ अगो अच्छा तो उसको वहाँ पे कुछ हुआ था लास्ट ईयर लाइक अ बिग काइंड ऑफ हरिकेन और समथिंग हरिकेन तो नहीं देयर वाज समथिंग यानी हैपेंड कि आइस हाँ यानी कि यहाँ पे डेलिस में तो इट्स अ वेरी वैसा वेदर है ना इट्स मोर लाइक वार्म और वो Yeah, that's what लास्ट कपल ऑफ इयर्स and उसके उस वो बेचारी वहाँ पे गई बड़ा घर बनाया मरियम ने उसके 4 बच्चे हैं एंड शी मेड अ बिग हाउस एंड एवरीथिंग वाज डन एंड एवरीथिंग एंड सारा उसका किचन के एरिया बेसमेंट वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गया गॉट डिस्ट्रॉयड हाँ हाँ क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप टू सो या मच क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका स्विमिंग पूल एंड बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट यूज्ड टू दिस थिंग या एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मरियम्स मदर वाज माय फ्रेंड रुखसाना वो भी गई हुई थी बेचारी उसने भी घर लिया क्योंकि मेरी बेटी चली गई है देन उसका तो वाजंट दैट बैड बट डॉटर्स मरियम्स इज रियली बैड तो अभी तक बेचारी ठीक कर रही है फिर उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं यहाँ पर रहना नाउ दे मूव टू अटलांटा ओके They हाँ moved to Atlanta, so अभी वो घर ठीक करके then she's going there too. So the mother went there already. She's already bought a house in Atlanta. So कहती है हम वहाँ से भी निकल गए. मैं कहा क्यों बात क्या है? कहती है नहीं वो उसका घर भी the husband हाँ said हाँ मैंने नहीं यहाँ पर आई थिंक वो बैड टाइमिंग हो गई उनकी इसलिए कि bad timing या मैंने वही कहा मैं कहा इसलिए Dallas तो I heard it's a nice place. क्योंकि अच्छा वो होता बस वही है कि 4-5 डेज अब लास्ट 2-3 ईयर से ये हो रहा है कि अराउंड दिस टाइम यानी कि ये फरवरी जनवरी उसमें टेम्परेचर गोज सो लो और आई थिंक अब नाउ दे प्रॉब्ली विल बी गेटिंग मोर प्रिपेयर्ड Yeah, that's what वो वाले वही जैसे कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सारी दुनिया में ही फर्क पड़ गया है everything is changing तो चेंज इतना हो ज्यादा कि टेम्परेचर डाउन कि इलेक्ट्रिसिटी वाज आउट और फिर सारा डैमेज टू ऑल द प्लम्बिंग और स्विमिंग पूल्स डैमेजेस because of that I तो mean that so did it have snow I think snow भी पड़ी है वहाँ पर
हाँ वही ना स्नो और ये बस 1-2 दिन होता है यानी कि इतने क्योंकि यहाँ पे जो स्नो है ना दैट्स मोर लाइक अ ब्लैक आइस टाइप का यानी कि ओह! बिकॉज़ आपकी आपकी जो मीटिंग होनी थी उनके साथ एक दूसरी आपके जो फ्रेंड है थर्ड वन आई हैव हाँ टू उस आस्क दिन कॉल हर। हाँ बट थैंक गॉड इट वाज फाइन सो वी वर एबल टू Yeah, डू because इट Dr. Sophia told me मेरी कोई we having three of us are getting together and we're talking about different things. तो कहते only if it doesn't snow. अभी कहते स्नो आ रही है, we don't know कि क्या होने वाली है. But then I saw that उनका प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने कहा maybe that means it didn't happen that much. You know, something must have happened. राइट So न्यूयॉर्क you know, with the वाले big कहते हैं problem. इतनी सी स्नो है इसमें क्या है मैंने कहा भाई तुम्हारी स्नो इज डिफरेंट हमारी स्नो इज हमारा क्या होता है कि इफ देयर इज अ स्नो वो स्कूल द स्कूल जस्ट दे क्लोज द स्कूल फॉर अ डे और टू देयर इज नो वन इज आउट हमें जाना पड़ता है क्योंकि हमको तो जाना है हाँ तो वो बट इट्स जस्ट आई सो डेंजरस यू नो सब स्केर्ड और इतने एक्सीडेंट्स Black ice वगैरह तो is व्हाट दे black ice is very dangerous. I know. आइस और वो तो वो क्या करते हैं कि दे जस्ट क्लोज एवरीथिंग व्हाटएवर थिंग्स कैन बी क्लोज तो और क्योंकि इतने आप रिसोर्सेज डालें टू क्लीन दैट दे जस्ट क्लोज एवरीथिंग फॉर वन डे और 2 days Yes. और बैक टू नॉर्मल देन आफ्टर few hours so there is that That's it. I mean स्कूल का तो करना they should. और यहाँ पे स्कूल का जब तक बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं बहुत ही ज़्यादा ही सवेर नहीं होते बंद ही नहीं करते. हाँ नहीं वहां पे तो मतलब दैट्स समथिंग के फॉर मंथ्स यू आर इन स्नो तो वो तो फिर हर चीज नहीं Yeah, that is and different thing. they have resources there to just उनके सारे prepared है ना कि भाई we know that that's going to happen Happen, जैसे yeah, that is true. I mean there was ice storms Now and the in few things are minutes everything was clean the things are getting better here now. स्प्रिंग आ रही है. तो एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जैसे कि वुमेन्स के लिए सब चीज़ें उनको व्हाट शुड दे लाइक लेट्स से द बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हाट आई मीन व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड ऑलवेज बी चेकिंग गेटिंग चेक्ड. कई होते हैं लेडीज नहीं मैंने नहीं कराना ये मेमोग्राम मैंने नहीं कराना ये नहीं कराना सो दे शुड नॉट इग्नोर दोज थिंग्स. सो व्हाट आर यू थिंक सजेस्टिंग कि सब ये चीज़ें करनी चाहिए to prevent anything in the future like breast. Depends on the age also लेकिन क्योंकि आपका एज और फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री और वो लेकिन एवरीथिंग व्हिच अभी जो मैं बता रही हूँ कि बेसिक ब्लड वर्क जैसे होता है आपका उसमें आपका क्रिएटिनिन किडनी नंबर्स चेक होते हैं आपका ग्लूकोज लेवल योर TSH थायराइड vitamin D is not something कि आप usually they check it if you're suspecting then they usually ask to check लेकिन vitamin D deficiency it's so common अपने बच्चों में बड़ों में everyone is vitamin D deficient looks like That's what I heard. तो vitamin D और जैसे मैंने बताया thyroid और आपका hemoglobin usually in females you know hemoglobin anemia is of course very common so these are the basic things or plus with a certain age बोलते हैं after 30 and all you start doing the mammogram फिर आपका after 50 and all then you do the DEXA scan for osteoporosis you know for your bones तो वो सारे then you just have to these are Yeah, वो मैंने कराया था. Yeah, all these things. तो ladies को जो sometime they let it go. They don't do the mammogram is very important too. I think some people. I think is it suggested every year after certain time or 2 years or something. What is the हाँ right thing to? इसमें और इसमें डिपेंड करता है आपका फैमिली हिस्ट्री वगैरह में भी ना क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर वो कुछ है तो फिर देन दे जस्ट वो और अगर ऐसा नहीं है मतलब ऑफ कोर्स यू जस्ट हैव टू डू योर सेल्फ चेक एग्जाम राइट ब्रेस्ट सेल्फ जो आप एग्जामिन करते हैं यू जस्ट यू शुड डू इट डू Right. नॉर्मेलिटी या इस तरह की चीजें तो वो लेकिन I sometimes think they were suggesting once a month or something check करो. Like हाँ हाँ check. मतलब ये तो आप अपना आप जब भी आप चेक कर लें ये दैट्स योर बॉडी आप कहीं भी कभी भी वो लेकिन यू शुड एट लीस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस That's good. That's खड़े good. होकर स्टैंडिंग लेट कर और थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड होकर देन यू हैव टू डू योर एग्जाम Wow. और अंडर आर्म्स में यानी कि जो आर्म पिट है वहां पे सो टू सी के वहां पे कोई इस तरह की थिकनिंग या कोई लीजन या कोई इस तरह की ना कि टेंडन या कोई भी इस तरह की हार्ड वो चीज ना हो जो हार्ड Right. That is the main check. A lot of people खुद ही उनको सब
people see it themselves, then they go to the doctor. पता चल जाता है उनको. Exactly. बहुत सारे तो इसी तरह होता है ना कि you just go Self to exam doctor. के बाद. Right. Yeah. Self exams they can do that, and other things that they do also in a year. They should, of course, physical exam is very important too. Like once a year, I think, get the whole physical done. You were saying कि भाई symptoms जैसे heart attack के and वो the females they do not get the same symptoms as men, right? It's not always your heart, chest pressure going to your jaw. They don't get it like that. Sometimes just feeling very tired. Sometimes you're feeling tired all the time. You cannot do anything. But tiredness तो आपका ये है कि every person is now tired for one reason or another. That's sometimes very hard. But if you see anything unusual, कि you're just getting so much tired, so it can be one of the reasons कि your heart arteries are not, in good shape. अच्छा. Yeah. आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही है थोड़ी. Let me see. Sounds. I think आपके उसमें there is some show ऐसा there's a noise. I don't know if मेरे उसमें ऐसा नहीं बता. अच्छा. नहीं आवाज़ नहीं हाँ. Okay. I don't know what is this. Some kind of a sound coming. You're right, but the voice keeps on coming and going. नहीं अब better है. Sounds better. So there is some kind of a buzzing sound coming. I don't know why, but sometimes connection में हो जाता है. Let me see if I can go back to. I'm gonna go back to Facebook. Might be better over there. Oh, yeah, that's better here. So anyway, I won't be able to see the. I'm gonna see the comments the other way around. उसको Facebook में इधर जाऊँगी. But anyway, it was a very very nice session. आप सब कह रहे हैं बहुत अच्छा आपने explain किया है. Everything, so many things that you explained to us. You know, like it's good to know from the doctor. हम तो अब खुद ही guess करते रहते हैं ना. But when the doctor comes and tells us that we should do all these things, so I think all of us should really pay attention. So, you know, and people are saying For health, like last couple of years, you just know, okay, your health is so important, right? मतलब हर चीज आपके पास हो, but if you just lose your health, nothing looks good, nothing feels good, nothing is good. nothing is good. You're right. No, that's true. I mean, health is wealth right now, I would say. That's what we have been just हमारी upbringing और इस ये जब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि health is wealth, that is really true, right? Health is wealth. That is wealth. Health देखोगे तो I mean we take care of our health, and we don't have any पैसे का अगर if we're not well, what's the use of all this money? We can't do anything with it. That's that is the thing. But I want to really thank you so much for coming, and next time, I mean next time भी आपसे बात करेंगे कब आए, and because these ladies like to ask all these questions, so that is why I said we're gonna get Dr. Sobia भी आती थी, आप भी. Dr. Sobia is a little bit busy right now, but maybe in 2 weeks or next time when you have off, आपका section का we'll organize that day. Yeah. Or, I mean, of course, this is something like general but I was more kind of thinking, और इससे जब क्या होता है कि जब मैं when I'm reading about this here, this helps me, my family, and others. So, I mean, of course, whatever I'm learning, it's helping me too. तो उससे मैं, but that's what I was thinking कि everything जो main हमारी problems होती हैं, of course, male and females both, जैसे osteoporosis हो गया, diabetes, high blood pressure, ये सब, that's something which is so common. So we can just discuss one topic or उसमें सारी exactly. So next time what we're going today was just a general get together kind of a thing. That's the general overhaul questions किए हमने. But next time we'll pick one topic, and I'm going to ask the audience over here what they like to talk about. Maybe obesity or heart के बारे में, या some subject you can suggest also, and then we'll go over that, because something that benefits the women के लिए we have to, women or men also, we should not discriminate women or right. women empowerment की बात करते रहते हैं ना हम सब. That's why. But anything that affecting the community or children even, it's okay, we'll talk about that. So आप कोई subject आप लेकर आना जो हमको सबको benefit करेगा. You bring that subject. I think in 2 weeks from now is good, if that's okay with you. Yes, yeah. That would be fine. I will check the date. But I will, of course, I will keep in touch and see whatever. I mean, if there is any
topic or anything, any suggestions, of course, that we can do too. So thank you so much, Arunji. Thank you so much for coming and taking the time and being with us. And Dil Diyan Gallan is very, very, we are all very happy. Everybody is watching and they're very thankful कि आपने इतना अच्छा सेशन किया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सबको. So I'm also very, very thankful to you. I learned a lot also. You learn it when you learn from each other. That's how it is. And Exactly. you experienced, and Dr. Sobia ने भी बहुत अच्छा, उन्होंने भी उनके साथ भी बहुत अच्छा सेशन हुआ था. So I would say thank you so much, and we'll see you in a couple of weeks. And thank you everyone for joining today. And don't forget to join tomorrow, same time, same place. We're having a wonderful singer, Kandambari Ji from Florida will be joining us. So same place, same time. Okay, thank you so much, everyone. Have a wonderful day, everyone. Bye bye. Thank you so much, Arunji, for joining, and same to you. Have a wonderful day. Relax and enjoy your day. Thank you. Okay, thank you, Thanks a lot. Veena, for having me, and of course, all the audience. I I will will see you take on the another comments picture later. from the Zoom. I will take another picture from here. Yeah. And हमारे इस ग्रुप में we have the recording also.